you all understand what is happening. The second example is we had Uber. All have heard about Uber? Uber is a company for cab sharing. Right? Someone wants to go from A location to B location, there is a cab. अभी वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, व्हाट वाज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट? अगर तुम इधर से पुणे छोड़ के तुम बैंगलोर को जाते हो, दिल्ली को जाते हो, एंड यू वांट टू कैच अ रिक्शा, लोग अपना मीटर को ऑन नहीं रखते. They will say 500 rupees, 200 rupees. Even here in Bhatraj and all, you will see this particular problem. ये प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए वो उन्होंने एक सॉल्यूशन यूएसए में निकाला था. उबेर, from going from A location to B location, someone will need one particular cab. They don't, पार्किंग स्पेस का झंझट नहीं रहेगा, वो कार कंटिन्यूसली मूव हो रहा है. दिस वाज द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. समझ में आ रहा है? Compelling problem identification. Compelling problem identification means this is the problem. The problem is that we need one particular cab at our doorstep, and it has to solve the solution of me going to some destination. Do you agree with this problem? This problem, a straight copy. It's a straight copy. Ola bana hai. Okay. Now what exactly happens whenever it is a copycat model को formula बताते हैं. What is formula? I am very sure that many of you all would have seen Jawan movie. All these popular movies you would have definitely seen. Okay. At least forget about everything, you would have seen Sairat. Sairat तो देखा है ना? Sairat film hit हुआ. Do you agree? उसका कॉपी कैट मॉडल करके हिंदी फिल्म में एक और फिल्म बनाया. दैट वाज आल्सो रीजनेबली हिट. उसको प्रूवन बिजनेस मॉडल बोलते हैं. प्रूवन बिजनेस मॉडल मींस फॉर्मूला. एक जगह चला है तो एक दूसरे बाजू चलेगा ही. ओके. और उसको लोकलाइज एनवायरनमेंट में चलाना है. लोकलाइज एनवायरनमेंट मींस व्हाट इज लिकिंग इन साउथ इंडियन फिल्म्स. If you have to make it in Hindi, you bring in Hindi flavor and you will make that particular movie hit. Script सब same रहता है. Are you getting the point? वही है Uber और Ola का story. Nothing different. Uber is there and we need to do Ola. What did Ola do? They kept researching in Google. Please understand. कौन सा formula success को मिलता है? You have to use Google effectively. So if you understand what is probing, probing में copycat models चलते हैं, and copycat models किसके लिए चलते हैं? Google is being used by billions and billions of people. India itself is 135 crores population, or it could be more also. Each and every person is trying to use Google. Do you all agree? It's a compelling business model. Okay. Then so many people are using it. It is consumer centric. इसको कंज्यूमर सेंट्रिक बोलते हैं. तो जब तुम लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हो तो आर यू मेकिंग अ कंज्यूमर सेंट्रिक एप्लीकेशन और गोइंग टू डू अ बिजनेस एप्लीकेशन? हम लोग बोलते हैं वी वांट टू डू ईआरपी सॉल्यूशन, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एसएपी का प्रोजेक्ट है, वी वांट टू डू टैली. ये सब बिजनेस टू बिजनेस सॉल्यूशन है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर सॉल्यूशन नहीं है. जो भी कंज्यूमर सॉल्यूशन रहता है वही बिलियन डॉलर का बिजनेस होता है. ओके. सो दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड. कॉपीकैट मॉडल को ही इन्वेस्टर ज्यादा प्रेफर करते हैं. कंज्यूमर सेंट्रिक. मेनी पीपल कम अप विद वेरी गुड concept. Correct? Like you came up with some stapler pin concept, someone came with a pot concept. Is it having an audience? And that audience, is it consumer centric? Consumer centric अच्छा रहेगा तो वो business चल जाएगा, otherwise it is not going to click. Moving concept समझ में आया clear? Hello, all from the batch means. Now let us go to innovation. Okay. What happened was there is another story for you. Bill Gates. Many of you all would have seen Bill Gates. Definitely you would have seen him also and you have seen what he is doing. The most popular contribution which Bill Gates brought to the world was disk operating system, DOS. Okay. तो अभी भी DOS है. कमांड में आप जाओगे तो वो DOS दिखाई देता है.
So what happened was he was having his friend in the Steve, and Steve was doing lot of GUI and everything. And Bill Gates is a hardcore machine learning programmer. Means he is more like an assembly programmer. He came up with this operating system. Now the problem was ये operating system को कौन खरीदेगा? Okay, IBM was trying to make desktop machines in 1989 90s. He convinced them that please keep it free. Okay, इनोवेशन को तुम फ्री में बेचो. इनोवेशन का एक्सेप्टेंस फ्री में बेचने से ही होता है. प्लीज अंडरस्टैंड. So he didn't make any money. He said, please use it. Naturally, IBM was having mainframes. तो IBM के लिए तो ये सबसे अच्छा बोल हो गया कि कोई फ्री में दे रहा है, push it, push it, push it, push it, push it to such an extent that people become dependent on it. Do you agree? इनोवेशन के ऊपर डिपेंडेंसी आ गया. इनोवेशन के ऊपर डिपेंडेंसी आने के बाद then slowly he got into copycat model. Please understand वो probing कहाँ से आया. That those days whoever were there in the 1980s 90s they will agree that we had Howard Graphics, we had Lotus 123, and we had Howard Graphics for presentation, Lotus 123 for Excel sheet, what these days you are seeing in WordStar. एक combo रहता था. लोटस 123, वर्डस्टार, हार्वर्ड ग्राफिक एंड डीबेस. ये आ गया तो तुमको नौकरी मिल जाएगा. आई एम टॉकिंग अबाउट 1989 टू 90s. नथिंग वी डिड. रिसर्च प्रोबिंग एंड बोरलैंड कंपनी था. बोरलैंड कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाएगा मैं उसका सेम टू सेम कॉपी करके मैं अपना वर्जन बना दूंगा. सो टुडे व्हेन यू सी एमएस ऑफिस एंड हम लोग सब पूरा एमएस ऑफिस पे डिपेंडेंट है. इट्स अ कॉपी कैट मॉडल. WordStar became MS Word, Howard Graphics became this PowerPoint presentation, and Lotus 123 is now become an Excel sheet. क्या दिमाग लगाया? What is the innovation? Bundle दिया. Bundle, a package. You can use it. So please understand this probing concept. Okay, the probing concept and innovation concept, how you have to use it. तो तुमको कैसे है, घर में भी क्यूरियोसिटी रहना चाहिए, बाहर भी क्यूरियोसिटी रहना चाहिए. तो क्यूरियोसिटी इज नॉट देयर, देन देयर इज अ प्रॉब्लम. देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम. सीरियस प्रॉब्लम मींस क्या? तुमको मालूम ही नहीं तुम क्या करने वाले हो. ओके, एंड दैट इज वेयर देयर इज वन इश्यू अराउंड इट. सो इनोवेशन इज समथिंग व्हिच इज चैलेंजिंग. इनोवेशन में कोई पैसा डालता नहीं है. ओके, टुमारो इफ आई सपोज यू वांट टू मेक अ पिन, no one is going to believe in you. You would have seen Padman movie तो आपने देखा ही रहेगा. That guy is first connected to me in LinkedIn. He has done lot of struggle and he came up with one sanitary pad. No one will believe in that particular thing. Okay. तुमको जो श्रम तुमको ही करना पड़ता है. So what has happened? Innovations के लिए गवर्नमेंट ने ग्रांट्स चालू किया. You should understand why grants come in. Innovations के लिए ग्रांट चालू किया है because innovations को सिर्फ angels ही blessings दे सकते हैं. And who are your biggest angels in your life? Common sense, please. Great. We'll ask first. Who is your first angel in your life? This you should know. First angel, huh? Parents. First angel will be the mom who gives you the birth. Second angel is your father. So this is the story of passion. Passion means क्या? तीव्र इच्छा. Strong desire. When I ask you to have a strong desire, the strong desire is towards obsession. मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला ऑब्सेशन नहीं बोल रहा हूँ. It is an obsession of what you want to do in your life. Okay, तुमको क्या बनना है, वो बनने के लिए तुम क्या क्या करने वाले हो, वो to get that particular thing. Okay, and that also in the right path. So क्या होता है? This passion story is I got a vision in 1996 that एक मदर के womb में बच्चा जब आता है, मदर feels pain and pleasure, right? पेन भी होता है, बच्चा लार पे मारता है, but that person is bearing, correct? The mother is bearing. When the child comes out on the first time, what exactly happens?
जब बच्चा इमीडिएटली आ जाता है, what it will do? Come on, this is a common sense. It's again a common sense question, na? How does a child gets recognized that he or she is alive? This is an interactive session. You have Ah, to you all have to interact. speak. Come on, this is something which is how you will come to know? When they cry. Cry means what? Heralding के मैं अभी कुछ तीर मार के जाने वाला हूँ. Okay. अभी दुनिया दिखा रही है that kid is crying and it needs a support system of 4 people. Do you agree? तो क्या होता है तुम सिंगल करने वाले हो कुछ तो वो तुम्हारे लाइफ में नहीं होने वाला है. You need people. And this is what is the first thing. Now when the child gets into the school, colleges, so school में mother will give chocolate, biscuit, everything is on thing. जो भी hardship है, it is ignored from the kids. Afterwards, when the kid comes into teenage or presently what you are, what exactly happens? What is the change which comes in? चलो एक तो कॉमन सेंस है हम लोग ये स्टार्टअप का नहीं पता है कुछ भी. The first thing we start doing is we start telling small lies. Do you all agree? हमारा डिमांड एंड नीड ज्यादा हो गया है. Now we want something which we cannot go and tell to the parents, and we want to support that need. And that is the reason at that particular moment of time in USA, 14 years के बाद बच्चे लोग को हकल देते हैं या बच्चे लोग खुद करते हैं. It's like बिल्ली का जब. Do you understand the personality traits? Now when the child becomes independent, what the child will do? Internship, do any damn thing. जाके उधर सबवे में जाके वो सबवे का वड़ा पाव बेचता है. हमारे इधर के लोग कर सकते क्या? नहीं कर सकते. That is the setting environment. Why USA prospers and why India doesn't prosper? हमारा एनवायरमेंट अच्छा है पर एनवायरमेंट में क्या है वी आर हैविंग रिजर्वेशंस. हम लोग के पास शाइनेस है. हम लोग बोलना नहीं चाहते. वी डू नॉट वांट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. हम लोग कम्युनिकेट गॉसिप गुडसिप सब करेंगे लेकिन व्हेन वी वांट अ मीनिंगफुल टॉक एंड डायलॉग सब चुप. एक लीडर करके आपको बात करेगा आप क्लैप कर लोगे. लीडर ने बोल दिया वोट दो आप वोट दे दोगे. हमको हमारा झंझट नहीं चाहिए. वी आर हैप्पी इन आवर ओन स्पेस. And that is one of the reasons Made in India is a failure. You have to understand why Made in India is a failure. ये बोलने से नहीं होता है. Each person has to sit and work, then only you can succeed. So setting environment is an environment where जब हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को entrepreneurship ecosystem बनाना है, incubation cell बनाना है, what is madam's expectation? Can we have 2 or 3 students each having one startup? करेक्ट. एक कंपनी का आइडिया लेके हम लोग इसको आगे लेके जा सकते हैं ना. उसके लिए कंसिस्टेंट डिटर्मिनेशन जो होना है दैट इज समवॉट मिसिंग. सो अगेन वी मूव टू द प्रूविंग. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो सिलिकॉन वैली का हुआ था इट वाज जस्ट लाइक हिंजवाड़ी फेज 1 और it could be worse than that also. Mountains and ये सब थे and they said that it was an orchard. Okay, lot of fruits used to be over there literally. So वो ऑर्चर्ड में इन्होंने बोला कि लेट अस स्टार्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स. देखते देखते सब एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आ गए. When the education institutes start coming, from where they copied that education institute model was Harvard University. Means it was Oxford, UK. उन्होंने जब वो चालू कर दिया धीरे धीरे उधर के बच्चे लोगों को they said you do whatever you want. हमारे ही लोग कंज्यूमर बन जाएंगे. टेक एन एग्जांपल ऑफ फेसबुक में एक सिंपल चैट सेशन का उन्होंने बनाया एंड वो चैट सेशन एंड इंटरेक्टिव put all the students photos and all and you all can communicate with each other. Mark did this whole damn thing and he pushed it. There was a garage concept. You have to understand what is the garage concept. Garage concept means what? ये बिल्डिंग का कौन सा भी कचरा का स्थान जो है जहाँ कोई लोग नहीं जा सकता है वो जगह को साफ करके तुम अगर वो ट्रस्ट
ट्रस्टी को भी आके बोर्ड ट्रस्टी को बोलोगे कि वो जगह में हम लोग को इंक्यूबेशन सेल खोलना है, that person will say करून द्या. They are not interested in that place. That place is dirt. So यूएसए में जो बंगलोज में जो गराज का स्पेस वेकेंट रहता था उधर स्टार्टअप्स करते थे. अब इस गराज का माहौल कैसा है? इट इज स्मेली, डस्टी, no fan, no AC. Are you needing all this kind of luxury? The first thing you have to ask. Can I learn in a garden? Can I learn in a slum? Can I learn in near a gutter? If you cannot, okay, you are still not in that hardship path. Okay, so in passion, when you are at a teenage level, तुम्हारा पाथ ऑफ कर्मा चालू हो जाता है, राइट पाथ और रॉन्ग पाथ. राइट पाथ में तुम जा रहे हो एंड यू बिकम कॉन्फिडेंट, देन यू बिकम पैशनेट. एंड इफ यू आर हैविंग लो कॉन्फिडेंस, that low confidence will strive you, that low confidence will, we have to make you confident. Coincidentally, let me tell you, passion, it came in the Dasera as the vision, and then on 25th of Christmas, I got one small first seed funding by a Sardar, Guru Nanak, kind of a thing. And the first entry into the office was Ramzani. So, what I am trying to tell to you is why this amalgamation of all this cult, religion and all is important, because business में कुछ नहीं रहता है, business में वो consumer ही दिखाई दे रहा है. So what happens is whenever you are making a business which is pan consumer, chances of success is more higher. Don't make it for a specific community, don't make it for a specific group, don't make it for anything. Think broad. Are you getting the point? उसको scoping बोलते हैं. Scoping means you have to scope. Narrow the scope. Narrow the scope. Whatever is your idea, वो idea को कितना narrow करके उसके ऊपर focus करोगे, that will be there. So suppose you are having 5 goals in your life. Think of one goal which you can achieve it easily. That goal, if you can achieve it easily, means तुम्हारा एक success चालू हो जाता है. You will start getting a confidence. Don't take a complicated goal. तो अभी let us get into what exactly is a startup. I gave you an assignment, right? What was the first observation? अगर यहाँ से तुम देखते रहोगे तो what was the first observation you will have? हम लोग में से कोई viewers रहेगा and we'll let open one particular piece of paper and you write it down. You were hustling. Right? There is a hustle. Means तुम लोग बुक निकाल रहे, पेन निकाल रहे, सोच रहे and all that kind of a thing. That particular hustle, okay, when you do it, वो stand up India जो बोलते हैं. What is stand up India? When we'll ask you to now get up. Someone will get up fast, someone will get up slow, someone will not get up only. Okay, that stand up India is something where are you standing quickly? This is the symbolic way of thinking. Okay, and then what exactly is a startup? Okay, startup is only an experiment. It's an experiment. Experiment means ये जो हम लोग बोलते हैं कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलो, प्रोप्राइटरी फर्म खोलो, लिमिटेड कंपनी खोलो, it's all, there is no need of all that. Okay, this is what exactly happened in the US. People were working in the garage, they were experimenting. कोई टेक्नोलॉजी बना रहा है, कोई बैटरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, एंड ये कर करके उन लोग स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स बताते थे. बताने के बाद क्या होता था, एक बड़े कंपनी के जो भी है वो आके वो एक्सपेरिमेंट को देखेंगे एंड वो बोलेंगे नो दिस इज एन एक्सपेरिमेंट, नाउ आई विल इन्वेस्ट सम मनी इन इट. The investments used to not be too high. It used to be just $1,000 to $5,000 to $10,000. Means इधर का 1,000 रुपया, 2,000 रुपया and all. It's very low cost model. Okay. Looking at that particular model, slowly research labs started coming around that particular colleges. After the research labs, companies themselves started coming around that particular college. So please understand how Silicon Valley got built. Okay, people want to be in IT industry, you should know how that Silicon Valley got built. अभी जब वो build कर रहे थे,
हमारे देसी लोग वहां गए, उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखा कि व्हाई नॉट नारायण मूर्ति एंड ऑल दीज folks, they said why not we give them technical resource. तो उनका पेन पॉइंट उन्होंने देखा कि टेक्निकल रिसोर्स का प्रॉब्लम है, टेक्निकल रिसोर्सेज हम लोग उनको देने लग जाएंगे. The difference between the Indian market and the foreign market is only two things. The Indian market works on per month and we get the money every month end. Okay. In USA, in Europe, okay, USA, Europe, all the Western countries, you don't get money on per month basis. तो एक तुम्हारे दिमाग में एक घुसाना बहुत जरूरी है. Per month के basis पे नहीं है. It is every 2 weeks you get money. उनका क्या मतलब है 2 weeks का मतलब है? अनलाइक इंडिया जहाँ हम लोग एक महीने में हम लोग काम करेंगे एंड विल बी वेरी हैप्पी इन माइलस्टोन, वैसा नहीं होता. उधर तुम घंटे के हिसाब से क्या प्रोडक्टिविटी कर रहे हो एंड दे रहे हो, तुमको टाइम शीट देना पड़ता है. सडनली यू आर फ्रॉम अ माइंडसेट ऑफ पर मंथ टू पर आवर बेसिस, मीन्स तुम और प्लम्बर में कुछ फर्क नहीं है. प्लम्बर हमल कर रहे हैं, हम लोग कोडिंग कर रहे हैं. तो प्लीज अंडरस्टैंड, कुछ भी फर्क नहीं है. तो 1 घंटा में तुमने कुछ नहीं काम किया तो वो सामने वाला आदमी बोलता तुमने काम नहीं किया. तो हमारे देशी लोग ने क्या किया, बेस्ट कम्युनिकेटर्स को हम लोग वहां भेजने चालू करें. बेस्ट कम्युनिकेटर्स. Now these communicators were telling we have great team, we have everything over here. अंदर का बात कौन बताने लगे कि यहाँ लोग बात भी नहीं करते, कोडिंग तो दूर है, बात भी नहीं करते. तो वो एक waterfall model, because you all are from the software, many of that, that's the reason I can very safely tell you, waterfall model में planning, analysis, design, construction, testing जो था, तो वो फेज में हम लोग, वो फेज में एक आदमी बोल रहा है, बाकी लोग पीछे काम कर रहे हैं, यू आर हिडन. इट वॉज अ परफेक्ट इंकैप्सुलेशन. अगर तुमने उप्स पढ़ा है ना, नो बिहेवियर एक्सपोजर, ऑल इंकैप्सुलेशन, परफेक्ट मैरिज till 2001 2002. 2001 एंड 2 में क्या हो गया, सडनली द कंपनीज रियलाइज कि यार कुछ तो गड़बड़ है. till then many of our guys have gone and settled in USA, and you know हमारे इधर कैसा है कि मैं आगे बढ़ो और बाकी लोग भाड़ में गए. तो हमारे लोग जाके बोलने वहां काम लोग नहीं करते. You don't know what is happening in IT. Fake resume, fake this, everything is fake. So it's a wake up call. They started coming to India. That is how the Scrum process got evolved. You have to understand why Scrum came into picture. ये Scrum model जो बोलते हैं, अभी उन्होंने suddenly तब तक टेक्नोलॉजीज आ गए, कैमरा ऑन करके बात करो. Each person is supposed to tell what you did today, what you are going to do tomorrow, and what are the problems which you have faced. Are you getting the point? अब स्क्रम में कंपल्सरीली बोलना पड़ता है. दे विल टेक क्विक डिसीजन. 5 लोग के स्क्रम में 2 बात नहीं कर रहे हैं, 2 को समझ में नहीं आ रहा है क्या बात कर रहे, रिमूव रिमूव to such an extent that Wipro itself is having an agreement in USA or only 1 day notice. Please understand, 1 day notice means what? You're going over there and you may get thrown out and you become an illegal immigrant. So please understand, many people say that they want to be employees and all. हम लोग को क्यों तुमको एम्प्लॉयमेंट का एक प्रोज एंड कॉन्स बताना जरूरी है, बिकॉज ऑल ऑफ यू वांट टू बी एम्प्लॉयज, ऑल ऑफ यू वांट टू गेट गुड सैलरीज एंड ऑल, बट वहाँ पर आर के बेसिस पे प्रोडक्टिविटी मेजर होता है एंड इट्स फ्राइडे टू फ्राइडे यू आर हिट और फेल. Okay, that is how the employment industry is at this moment of time. आप Google करके सर्च कर लो, Google itself is running 1,500 people. So please understand, when you are scoping and acting, acting is what? तुम action लेने वाले हो गए. After this particular session, are you all going to give that likes, dislikes, what is your hobbies? Okay, एक single idea, whatever you want to develop, are you going to give it to them? If you are each and every group is going to give it to the them, it is a success story. ये मेरा एक effectiveness का एक स्कोर कार्ड हो जाता है, correct? So action is not for me talking to you. The action is the reverse way. You all have to be more interested than me. मैं तो बोल के चले जाऊंगा, but
Are you having that particular zeal and enthusiasm? That is what is important. Is this clear? All of you? Yeah? Now, typically when you look into this particular thing, in an experiment you will fail. So the first experiment, what was the experiment? I want a job. A very nice job. Correct? What I told as an experiment, I said that assumption को हमेशा negative करो. I will not get a job. अभी वो I will not get a job उसको null hypothesis बोलते हैं. ओके स्टैटिस्टिक्स में इसको null hypothesis बोलते हैं. तो null hypothesis means assumption I am going to fail. अभी उसको डिस्प्रूव करने के लिए क्या होता है? इन फिल्म्स यू विल से कि मैं उसका खून पी जाऊंगा. ड्रामेटिक स्टेटमेंट. मैं बदला करूंगा. मैं ये बिल्डिंग के सामने बिल्डिंग खड़ा करूंगा. डू यू ऑल एग्री? So another film story for you. Narayan Murthy was always wanting to be an entrepreneur. The problem with him was he was having a girlfriend, Sudha Murthy. And Sudha Murthy told that if you are going to get married to me and you are going to say that you are going to be an entrepreneur, you are not going to get married to me. The parents will throw away क्योंकि हमारा यहाँ साइकोलॉजिकल टेंडेंसी क्या था कि हम लोग को एम्प्लॉय लोग ही चाहिए. गर्ल्स डोंट लाइक बिजनेसमैन. They want well settled guys. This is the fundamental truth, even till date. Okay. So in this, what he said, what she did, she had an idea. She said, "You join Infosys." Okay. In Infosys, but his mind was always in that business and all. So he went and approached to Wipro that I want to start something. Azim Premji liked his idea and all, and he said, "Why not you become again an employee?" Finally, it's an employee mindset. एंड आप जब एम्प्लॉय एग्रीमेंट साइन करते हो तो एम्प्लॉय एग्रीमेंट में एक नॉन कॉन्फ्लिक्ट क्लॉज रहता है. यू कैन नॉट कॉम्पीट विद दैट पर्टिकुलर कंपनी. ओके वो आइडिया पीपल डू नॉट नो. एक स्टार्टअप था अभी हमारा भारतीय विद्यापीठ कॉलेज में. डिड अ वेरी गुड प्रोजेक्ट बट इन ल्यूर ऑफ मनी 6.5 लाख रुपीज का पर एनम उसने एक साल के बाद को ऑफर किया है. एंड अभी उसको 10,000 रुपीज का स्टाइपेंड. बट एग्रीमेंट में लिखा है दैट all the ideas and everything whatever you are having that will belong to the company. In case if you leave in between for 1 year, whatever salary has been paid to you, you will have to return it back with interest. And she has signed it. She has signed it. Afterwards I told to her that you have made a very big classic mistake. Now she is, of course we are going to have a startup spin-off from her. She has refused to work for that because she had built an innovation. तो आपका इनोवेशन को कॉपी करने का बहुत लोग सोच सकते हो. तो इन इंडिया अनफॉर्चुनेटली द पेटेंट राइट्स आर वेरी वीक. ओके सो व्हाट इज द बेस्ट वे टू बीट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ पेटेंट? क्योंकि आइडिया तो है. प्लीज बिगिन वर्किंग ऑन द आइडिया राइट अवे. तुम्हारे जैसे लाखों लोग सोच रहे हैं. अभी एलॉन मस्क ने एक दिमाग में एक चिप डाल रहा है. करेक्ट. सो पीपल आर थिंकिंग योर ईच आइडिया इज नॉट नॉवेल. तो ऐसा गलत फहमी में मत रहो कि मेरा आइडिया चोरी हो जाएगा करके आइडिया ही नहीं बताओगे. इनोवेशन बाद में आते हैं, आइडिएशन पहला आता है. प्लीज अंडरस्टैंड द स्टार्टअप इकोसिस्टम. आइडिएशन फेज इज द फर्स्ट फेज. तो तुम्हारे पास जो भी आइडिया तुम पहला लिखो, उसको वैलिडेट करो रिसर्च करके, गूगल करके. यू टेल दैट सो एंड सो कंपनी इज मेड crores of rupees. It's a good idea, successful idea, you begin implementing. So start yourself right away. Now you are in the second year or third year, I don't know in which year. Afterwards you will be doing your graduation. These are the 4-5 years you will do it successfully, and that is what Mark and all. When you see young startups who are in the USA, they start at the college level, and that is the reason they are more successful. Is it clear? Now comes to the entrepreneurship facility. जो हम लोग incubation cell जो बनाने का कोशिश करते हैं सब colleges में and everything. What exactly is the struggle? So when I'll first complete the Narayan Murthy story. When Wipro did that, he came up and he said he had only one simple goal. जहाँ भी विप्रो रहेगा मैं उसके सामने एक बिल्डिंग खड़ा करूंगा. Literally it's a filmy. He loves films. It's well documented and think that he and Sudha Murthy have gone to almost all theaters in Pune city. It's documented.
तो he said मैं उनके सामने बिल्डिंग खड़ा रहूंगा. तो strategically wherever Wipro company is there उसके straight सामने में Infosys के Infosys का आदमी निकल के Cognizant बनाया. Cognizant का बिल्डिंग Infosys के सामने है. तो प्लीज अंडरस्टैंड वो तीव्र इच्छा कुछ भी रह सकता है. A very strong ambition for having a competitive spirit. Are you having that competitive spirit inside you? Or do you don't want to ever be competitive? There are two types of personality. एक clerk mindset और एक manager mindset. तो तुम clerk mindset में रहने वाले हो या manager mindset में रहने वाले हो? Clerk mindset is something where I'll work for 9 hours, 8 hours, and afterwards I get money, I'm happy. Balanced life. Correct? Government jobs लोग ट्राई करते करते रहते हैं, फेल भी होते हैं, and all that. You can see fail for more better understanding. The point what we are telling to you is ITES, IT enabled service में जहाँ तुम रात को शिफ्ट पे काम करोगे या कॉलिंग करोगे या डेटा रिसर्च करोगे, all these are fixed mindset jobs. Okay, उसमें तुमको पैसा मिलेगा and but you will not get a growth. What happens is in a startup ecosystem जब वो Facebook वाला आदमी पैसा डालता है and you are able to own and nurture it. Own and nurture means you are growing it. जब तुम ओन एंड नर्चर करते हो तो तुमको एक फायदा क्या आता है कि इन्वेस्टर्स तुमको $1 million, $2 million देते हैं. The example what I am telling to you is that in USA when the Stanford University, Harvard Business Schools and all started coming in, what the research says, उधर के academicians and उधर के students are very vibrant and very enthusiastic to create startups. Okay, because there is some small equity in each and every person. But how it works? Can anyone अगर मैंने बोला कि 11 बजे रात को एक लेक्चर लेने आ रहा हूँ, how many of you will raise your hand? I'm sure no one will raise your hand. No one will raise. Our mindset is totally different. In USA, the top-notch universities like MIT, Harvard, and all these, which we want to look at it and we get enamored. उधर बच्चे लोगों को वही ट्रेनिंग दिया जाता है जो हमारे आर्मी में एंड नेवी फोर्स में दिया जाता है. टाइम में आना है, रात को बोला सडनली हसल, गेट इनटू इट. एक वॉर रूम कंसेप्ट है. व्हेनेवर यू विल गेट इनटू द टोटल आईटी इंडस्ट्री, एक वॉर रूम कंसेप्ट है. प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है, प्रोजेक्ट को सबको एक साथ बिठा दो. बिग बॉस का घर है वो, कंप्लीट करना है, बाहर नहीं निकलना है, खाना अंदर आएगा. Okay, this is how the projects get executed. It's a big pressure. It's a pressure industry. So why it is a pressure industry? Please understand, dear friends. उधर लोगों को कंपनीज को $50 पर आवर मिलता है. Infosys, ओके. इंडियन इंडिया में अभी मिल रहा है उनको $24 पर आवर, $20 पर आवर. अभी $20 मल्टीप्लाइड बाय 160 आवर्स, $3,200 में लगभग उनको 2.5 लाख रुपीज मिल रहा है पर पर्सन के पीछे. 2.5 लाख रुपीज में 40% ओवरहेड स्टेट निकाल दो, वो लाइट ये वो सब तो मिल रहा है 1,20,000 या 1 लाख. अभी वो 1 लाख में प्रोजेक्ट 6 महीने को रहता है. 6 months you are on bench, no work, correct? And you are asking a salary of 6 lakh to 20 lakh. Is it going to work out? Where तुम्हारा क्या पैसा मिल रहा है अंदर एंड तुम क्या चाह रहे हो, टोटल मिसमैच. इन दिस मिसमैच डियर फ्रेंड्स, जो बड़े इंडस्ट्रीज है आईटी इंडस्ट्रीज, उन्होंने बोल दिया है कि हमको बेचना है कंपनी. Please understand, we are not scaring you up, okay? It's not a fear psychosis which we are putting. We are telling you the ground reality. They are saying that our people are not understanding why we are coming continuously to the students. We are coming कि 200-500 की भीड़ में दो तीन तो अच्छे जेन्युइन डेवलपर मिल गए जो हम लोग हायर कर सकते हैं. And it's totally frustration when we take interviews. Tell me something about yourself, silent. What you like, silent. Do you know programming? Yes. Have you learned database? Yes. Tell me in a database what is the difference between varchar and char? Silence. Then how are we going to hire people? Think of becoming an entrepreneur one day
and go through the challenge and pain point which one company owner is having, because उसको फर्स्ट तारीख को पैसा देना ही रहता है. When you are into the business, तुमको देना ही रहता है. वो आदमी नहीं तो तुम पे कोर्ट केस कर देगा, बोलेगा कि लाइबिलिटी हो गया. So what we are trying to tell to all of you is, you all take it very seriously. ये education, take it very seriously. I'll be very happy after all these efforts if all of you get in distinction. हम लोग ने अचीव कर लिया गोल जो बताने का है, but take it very seriously. तो क्या होता है, these kind of startups are your opportunity of a business continuity plan. नौकरी नहीं हुआ तो अल्टरनेट प्लान रहना चाहिए. इसके लिए हमारे इधर वो हमाल जो दिल्ली से हमाल, नॉट डिग्निटी ऑफ लेबर, आई एम टेलिंग यू, द प्लम्बर, द फिटर, all of these are never out of work. Why they are never out of work? They work on hourly basis. Please understand. They work on service basis. तो वो बोलते हैं गटर साफ करने का 500 रुपया, नहीं तो मैं नहीं हाथ लगाऊंगा. वो डिमांड में, करेक्ट. So this particular demand can you generate in your own work? This is what is the whole exercise. अगर तुमको ये समझ में आ गया, तुमको ये पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम पूरा समझ में आ जाएगा. Okay, you are going through this particular hurdle of probing, innovating, acting, scoping, setting, owning, and nurturing. ये 7 dimensions तुम्हारे दिमाग के अंदर डाल दो. Now can you move little bit slides below? No. No, this we have already told. From the mission, all by now you know entrepreneurship and employment is the focus. From the, I want to show you the statistics. Don't, next, 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 next. Yeah. What we did, we wanted to know whether we are going right or wrong. Okay. We wanted to know whether we are going right and wrong. हम लोग ने जर्मन बेस्ड कंपनीज के साथ हमने बेंचमार्क किया है, इंडियन लोगों के साथ नहीं किया है. हम लोग ने जर्मन बेस्ड कंपनी से बेंचमार्क करके, विच इज ग्लोबल प्लेयर, दे आर इन जर्मनी, दे आर इन ऑस्ट्रेलिया. उन लोग क्या करते हैं कि एक इंक्यूबेटर का परफॉर्मेंस कौन से बेसिस पे है, द इफेक्टिवनेस ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स सक्सेस. सेकंड इज हम लोग जो तुमको ट्रेनिंग दे रहे हो, तुम लोग इतने वाइब्रेंट हो कि तुम समझ रहे हो. एंड द थर्ड इज how much of network we are having. So I will be happy to say that T Combinator is having today 1,500 senior connects across the in India itself, and in US we may be having easily around 2,000, 3,000 connects. All of us connects. So what is one example? Example in startup ecosystem there is something known as social capital. ये social capital word कहाँ से आता है? 5 minutes. Okay. The social capital word, from where it comes, the social capital word comes from one very simple answer to the question. You are in Facebook? Facebook? It's not possible that you in Instagram. Please don't be ashamed to tell that you are in Facebook, Instagram, LinkedIn or not. Understand, today the US embassy who is giving you a visa, they are asking you these questions. Please understand. They get scared if you say that you are not in any social media platform. Yeah, ये person terrorist तो है कि नहीं? Please understand why social media, where it is coming in. So next time please don't come back with a negative answer, okay boss? I have scaled software company to size 500 plus. In this particular journey, we have seen lots of ups and downs. When we see that a person is totally silent or something, it's a wake up call which we can tell to you. हम लोग को क्या है कि we have done everything. Now this is something that we can easily go to any part of the world and we can do anything here. Please understand. Why we are sitting over here is my dollar rate in USA would be easily around $500 per hour because I am an MBA, PMP, CJET, CRISP, Masters Black Belt in Six Sigma. I am a certified operation excellence person with 4 MBAs: MBA Marketing, HRD, Operations and Finance. I am not trying to boast my education. Why I did? Because if I am going to teach all of you guys, I don't want anyone to come and tell to me that you don't know finance.
Please understand an entrepreneur needs to be curious about all the subjects. It has to go beyond your computer science. If you will say that me फक्त program करना, that is not the expectation. Full stack developer, full stack data engineer, full stack end to end. डेटा एंट्री करने को भी आना चाहिए, डेटा क्लीन करने को भी आना चाहिए, डेटा मैनेज करने को भी आना चाहिए. उसके बाद तुम पाइथन पीथन का तुम मैंने मॉडल बनाया, प्रिडिक्शन मॉडल्स एंड ऑल. डोंट बी इन द रॉन्ग इंप्रेशन. नाउ व्हाई यू डोंट हैव टू बी इन द रॉन्ग इंप्रेशन. वही प्रोबिंग डायमेंशन को एक्सप्लोर करते हुए चैट जीपीटी ने एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल करके वही प्रोबिंग मॉडल के ऊपर इट्स द नेक्स्ट $1 billion कंपनी. वही प्रोबिंग सेम फॉर्मूला इज नॉट चेंज. प्लीज अंडरस्टैंड, यू विल अंडरस्टैंड इट्स सेम फॉर्मूला. गूगल चल सकता है तो मेरा तो और अच्छा है, मैं तो समराइज कंटेंट दे रहा हूँ. सिंपल. तो समराइज कंटेंट एक इनोवेशन आ गया. मॉडल तो सेम है सर्चिंग का. एंड व्हाट इट हैज डन इज इट हैज चेंज द स्टाइल ऑफ वर्किंग. अभी एक नया डिसिप्लिन आने वाला है एक ही साल में, 2 साल में, जहाँ बैचलर्स ऑफ साइंस इन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आएगा. ये सब साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी सब भूल जाओ. हम लोग का सिखाना है. यू डोंट नीड मी, यू वोंट नीड मी. मैं तुमको क्या एक्स्ट्रा देने वाला हूँ वो तुम मुझे पूछोगे कि तुम क्या एक्स्ट्रा दे सकते हैं. मेरे पास तो ये सब दिखाई दे रहा है. सो चैट जीपीटी में तुमको जावा का कोड कर सकते हो, डॉटनेट का कोड कर सकते हो, सी का कोड कर सकते हो, सब कुछ वो कर सकता है. तो अभी तुम सोचो, अगर वो सीनियर पर्सन ही कर रहा है तुम्हारे साथ और सीनियर पर्सन उसको डायरेक्टली अच्छा ढंग से प्रॉम्प्ट दे रहा है, उसको आंसर मिल रहा है, यानी एक ऑनलाइन कंपाइलर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ऑनलाइन कंपाइलर, वो उसको ही टेस्ट करेगा. कोड तो चल रहा है. दैट पर्सन विल जस्ट नीड वन इंटीग्रेटर. भाई ये कोड को तुम डाल दो, वो चल जाएगा. देन व्हाट विल हैपन ऑफ यूजर्स. व्हाई आई टेल यू. We were so much hungry about money, big package, this, that, and everything, and all want only 5 lakh, 10 lakh, 4 lakh. They don't also want to take a job. Please understand, USA लोग बहुत स्मार्ट है. चलो LLM ही बना लो. LLM बना के डिजिटल मार्केटिंग को आउट कर दो, असिस्टेंट को आउट कर दो, सबको ही आउट कर दो. एंड वो तो छोड़ो, माइक्रोसॉफ्ट हैज कम विद Copilot. तुम लोग गूगल करके देख सकते हो Copilot. Copilot is coming at $5 per month. How much? $5 to $10. $10 multiplied by 80 rupees is how much? 800 rupees. Why will someone give you 20,000 rupees? It is able to schedule mails. It is able to send emails. You have to just little bit do programming. So these days स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग इज चेंज. वो क्या बोल रहे, एक दिमाग वाला प्रोग्रामर के साथ वो कोपायलट को काम करवाते हैं. कोपायलट एंड वो दोनों मिलकर वो काम करते हैं. सो वी वांट वन वेरी वाइब्रेंट culture over here. Very vibrant culture. We are there to groom you. We are there to guide you. But we don't want someone who is not communicating. He put in a phone. Yesterday I won't take the name of a college. We are telling, did you understand? Did you understand? No answer. Then it's like a pity. We can only pity you. Because we are the interviewers. I'm telling you, I'm being very frank with you. I'm a paid interviewer in some companies where they pay me 5,000 rupees for half an hour. Why will I select you? Because I am responsible for that 5,000 rupees worth of effort, right? I need to write a question along with that what answer you give. What will I give an answer? What will I write over there when you will be remaining silent? So days are changed over here. Lot of they will replace me also in that. They may be having one AI bot who will be doing the asking you the answer. So do you all want failures or do you want success? This is the thing which now you guys have to decide. We will stop over here at this particular moment of time. We will send you one questionnaire, startup questionnaire and research questionnaire also. All of you, if you all are very seriously interested, you do. We have first 20 students we take free from for the entrepreneurship. It is totally free. Okay. For advanced IT training program, what we do is we have one chargeable model. Okay, it's quite less. It's like
2,600 rupees per annum. 4 people join, it is 1,500 rupees. That 1,500 rupees divided by 12 is also how much? 150 rupees. हम लोग को वो क्यों हमने वो देखा है कि एक आदमी पिज्जा खाता है, बर्गर खाता है, and इंटरनेट में करता है. Is that particular person interested in actual learning in IT? That is the reason that particular pricing is there. We are okay with no one joining also. Please understand. But the point is what? It will be your loss. Because very soon, at least in the free entrepreneurship initiative, it's free. And that's what I'm telling. It's free. We are there to train you in entrepreneurship for free. But tomorrow you will say, I don't know React, I don't know something, I have to learn. Then that's where that small fee we have to pay. Okay? So please be vibrant, please be thoroughly focused and see this is one ecosystem where if you will see over here, we have been benchmarked in the value of ecosystem. Okay, we are having value of client status. We are having nearly 3.5 score rating, and this is 2019 score. 2022-23, we have got the best Asia Pacific Challengers Award. We won it in the Asia Pacific. Right now, Fee Commenter is the incubator, which is the only incubator which is in the student startup ecosystem space. The one which it continuously, constantly wins is the Kerala Startup Mission. अदर इंक्यूबेटर्स आर देयर बट प्लीज अंडरस्टैंड हमारे इधर इंक्यूबेटर का एक कंसेप्ट प्रॉब्लम क्या हो गया है कि मैंने एक इंक्यूबेटर बना दिया अच्छा सा कॉलेज में एंड उसको रेंट को चढ़ा दो पर सीट 6,000 rupees. That is not incubation, that is a co-working space model. Co-working space model में I scaled up a company which is EFC. Scaled means I just guided that particular person, Umesh Sai. He was a guy who came from some small village. उसने एक दिमाग लगा के वानोडी में एक पूरा बिल्डिंग ले लिया फॉर 20,000 रुपीज एंड बिल्कुल ऐसे बेंच में ईच बेंच में दो लोग बैठेंगे. उसने एक मॉडल निकाला 1,000 रुपीज फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. देखते 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 आज इसके पास EFC है जो हिंजवाड़ी में है, कल्याणी नगर में है. इट इज दे आर हैविंग 5,000 प्लस सीट्स एट 6,000 रुपीज पर मंथ. नोट छाप रहा है 3 crores. क्यों? क्योंकि ही वॉज डिटरमाइंड. नॉट गुड इन इंग्लिश, दिमाग वाला लड़का था, मेहनती लड़का था. तो वी शुड ऑल्सो अगेन नॉट बी इन अ फॉल्स इंप्रेशन कि ये दिस इज ओनली फॉर इंग्लिश पीपल और दिस. प्लीज कम आउट ऑफ दैट. तुम कौन से भी लैंग्वेज में बात करो लेकिन बात तो करो. आजकल प्रॉम्प्ट में हम लोग को समझ में आ जाता है वो लैंग्वेज. तुम कौन सा भी दूसरा लैंग्वेज में बोलोगे हम लोग गूगल में सर्च करके समझ में आएगा कि ये क्या बोल रहे हैं. सो प्लीज कम आउट ऑफ दैट माइंडसेट एंड बी thoroughly enthusiastic to do the startup ecosystem. Yeah, thanks. थैंक यू सो मच सर. बहुत ही अच्छा आपने हमें बताया कि कैसे हम लोग स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं. मतलब हम लोग को अब तक उतना बेसिक नहीं पता था कैसे हम लोग स्टार्टअप शुरू करें, फिर उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं. इसके लिए थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रकाश सर. और सरक कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर हनुमंत जाधव सर, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता सिंधे मैम, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस HOD सोनाली गोंडे मैम, एंड डिपार्टमेंट ऑफ इंक्यूबेशन से नीलिमा मैम. आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सब यहाँ पे प्रेजेंट रह के अच्छे से लेक्चर अटेंड किए. और बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले फ्यूचर के लिए कि आप अच्छे से कोई स्टार्टअप शुरू करो. और मैं सर एक बात कहना चाहता हूँ, TY कंप्लीट होते होते आई थिंक सो इसमें से 20 बच्चे ऐसे होंगे जो स्टार्टअप शुरू कर सके. इसलिए थैंक यू सो मच. Yes, yes. Yes, sir. Thank you very much. Thanks and everyone. We'll send you one questionnaire. Okay, Thank please you, fill sir. it up. Okay, Okay. immediately. Online question. Yeah, it's a Google startup. form test. It's a form. Okay.